हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे लास्ट लेक्चर तक हमारा एसेंट्रिसिटी फाइंड होना कंप्लीट हो चुका था। अब इस सेक्शन में हम कोर ऑफ सेक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं वो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कोर ऑफ सेक्शन, हाउ विल वी डिफाइन द कोर ऑफ सेक्शन। कोर ऑफ सेक्शन इज डिफाइंड एट द सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ द सेक्शन ऑन विच लोड एक्ट टू प्रोड्यूस ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो सेक्शन होगा उसका जब पोर्शन होगा उस पर जब लोड एक्ट होगा टू प्रोड्यूस ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस। लोड एक्ट to produce compressive stress. So हमें कोर ऑफ सेक्शन फॉर डिफरेंट सेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। हाउ विल यू फाइंड द कोर ऑफ सेक्शन? लास्ट लेक्चर में हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड करा था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड कोर ऑफ सेक्शन। अब हमें रेक्टेंगुलर के वास्ते एसेंट्रिसिटी फाइंड किया था फॉर एक्स एक्सिस। इरेज टू एक्स हमने फाइंड किया था जेड एक्सेस बाय ए। तो हमने किस तरीके से फाइंड किया था? इज इक्वल टू बी बाय 6 ई वाई बाय जेड वाई वाई बाय ए। ई एक्स एक्स इज इक्वल टू डी बाय 6 ई वाई वाई इज इक्वल टू b by 6. So basically the core of section means these sections. So this one section is equal to eccentricity for 1. So for core of section we multiplied this eccentricity or this eccentricity with 2. So on the x axis the core of section is equal to d by 6 into 2. On y axis b is equal to b by 6 into c. So is equal to basically this two of this is basically is equal to d by 3 or this is b by 3. So for core of section a raised to x for rectangular section is d by 3 on फिर y section is equal to b by 3. Similarly we have to find for circular section. This is the eccentricity for circular section. So eccentricity is equal to this d by 8. So basically core of section means this whole section. So this means is multiplied with respect to 2, then we get d by 4. And we have to find the core of section for rectangular and hollow rectangular section and hollow circular section. This is hollow and this is hollow circular section. So in last lecture we find the eccentricity for hollow rectangular section means for ax is equal to ixx by a, then we get bigger bd cube minus smaller bd cube divided by 6d into bd minus dd. And for y axis we get, sorry, this is section modulus, we get db cube minus db cube divided by 6d into bigger bd minus smaller bd. This is the eccentricity for x axis and y axis. So core of section is basically is equal to eccentricity into 2. So e raised to x into 2 and for y axis is equal to into 2. When we multiplied with it 2 we get the section means the centrally section on which core of section for means the load act to produce only compressive stress. So this is the section. When you find eccentricity and we multiplied by 2 we get the this section. This section means core of section on which load act to produce compressive stress. This is the center section.
Similarly, we have to find the core of section for hollow circular section. So eccentricity is same for both x-axis and y-axis. So eccentricity is equal to z-axis by a. We get d square. So core of section is equal to into 2. Then d square plus d square divided by 4d. So this is the core of section for circular section. When we get this, we get this portion means the load act to produce only compressive stress. So our whole theory part is complete and only remaining the numerical parts. We will get the numerical parts in next lecture. Thanks for watching and subscribe our channel.